Okay, let us start with our next chapter, that is third chapter of geometry, and that is circles. This is a lengthier chapter compared to all other chapters in your textbook, but the concepts are very, very easy, and I hope you will understand. Practice it. If you study first three chapters, your 60 to 70% of your portion will be covered, and you will get a lot of confidence to get more marks, probably even 90%. But study the first three chapters very thoroughly, because remaining chapters does not have any proof. Of course, trigonometry may have one or two proof, but the first three chapter contains proof. So study these three. Okay. Start with the first theorem. Before we start with the theorem, I would like to explain to you, revise in fact. There is no need of explanation because you people now are 10th standard and you study what is a circle in 7th, 8th and 9th. So, but let me explain you what is the definition of circle and all the different aspects of this circle which we will be studying in this chapter. So, what is a circle? Set of points, we call it loci. Loci is a set of well-defined points. So, if those who are finding it difficult to understand what is loci, leave it, we understand, because we are not going to study here loci. Loci was there in standard 9th. So, locus and loci. So, we are going to study only circles. So, I will make it easy, simpler for you. Let's define as set of points of loci. A set of points which are equidistant from a center is called a circle. Please see this. There are many points, dot, circle banta hai. Or we can draw a circle with infinite, there are many points on that circle. So, all these points which form this round figure is equidistant from the center of a circle, which is this O. Then we say, this is a circle. Okay? So, circle ka definition ho gaya. What is a point? Fixed point. O. Fixed point is called center of a circle. See, what is OP? ये मैंने R लिखा है यहाँ. What is OP? OP is the radius. आप लोग देख के बोल सकते हो रेडियस, लेकिन रेडियस का डेफिनेशन क्या है? A segment whose one end point lies on the center of a circle and other point lies on the circle is called a radius. I repeat, a segment whose one end point is on the center of a circle and the other end point is on the circle is called radius. PQ क्या है? PQ as written there is diameter. Diameter का definition क्या है? A segment which passes through center of a circle. Repeat. A segment which passes through center of circle. देखो O, which passes through center of circle and whose end points lie on the circle is called diameter. One more important formula which we will use not only in this chapter but also in volume mensuration, probably the last chapter. That is, diameter is 2 into radius, 2 times radius. We can see radius plus radius is PQ. The other definition we're going to study is secant. What is a secant? Please look at the figure carefully. A line which intersects the circle in 2 distinct points, S and T. A line A intersects circle in where? S and T. A line which intersects circle in 2 distinct points is called a secant. अब ये tangent क्या है? A tangent or a line
which intersect a circle in one and only one point is called tangent to the circle. ये तो हमने कर लिया. एक और पॉइंट जो हम यहां मेंशन करेंगे, that since tangent intersects a circle in one and only one point, if that point is joined with the center, we get radius. So we can say radius is perpendicular. Radius is perpendicular to tangent, or tangent is perpendicular to radius. Okay? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब आते हैं आपका पहला फर्स्ट थियरम, and which is exactly what we are going to prove, that tangent is perpendicular to the radius. इसलिए tangent theorem है. So please see the figure. We have a circle and we have a line L which intersects a circle in one and only one point, and that is A. So OA will become radius by definition. यही दिया है tangent theorem. Line L is a tangent to a circle with center O and point of contact is A. Prove that line L is perpendicular to OA. अब मैं नेक्स्ट जो बोल रहा हूं ध्यान सुनो. दिस इज द फर्स्ट इनडायरेक्ट प्रूफ. ऐसे नहीं, ऐसे खा रहा है. फर्स्ट इनडायरेक्ट प्रूफ of probably in 1, 2 and 3. ये 3 चैप्टर में पहला इनडायरेक्ट प्रूफ शायद होगा. मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कभी इनडायरेक्ट प्रूफ हमने पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में किए थे. ये पहला इनडायरेक्ट प्रूफ है. इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रूफ में जो हमको दिया होता है, व्हाट इज गिवन, या हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, उसको हम नकार देते हैं. वी रिजेक्ट इट. वी से इट इज नॉट पॉसिबल. जैसे अज्यूम करते हैं लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए. जो हमको प्रूव करना है उसको ही हम बोलते हैं नहीं बाबा ये पॉसिबल. फिर अज्यूम ये है नहीं, और वो है नहीं करके बाद में हमें जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन लेना है या थोड़ा सा पोजिशन और ऐड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. Let us assume that line L is not perpendicular to A. OA, line L perpendicular OA के साथ नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें और एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो हमने यहां लिया है. ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. ओके. अब हम यहां नहीं ले सकते क्योंकि यहां लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. मतलब समझने को, क्योंकि यहां हम एज्यूम करते हैं कि ये सर्कल ऐसा जा रहा है कि दिस लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है. तो समझ, टू अंडरस्टैंड, हमने ये यहां फिगर ऐसे ड्रॉ किया. ये कंस्ट्रक्शन आपका. सो सपोज सेग OB, हमने क्या कहा है? OA परपेंडिकुलर लाइन L इज नॉट परपेंडिकुलर टू OA. सो हम सपोज करते हैं लाइन L इज परपेंडिकुलर टू OB. B इज एनी अदर पॉइंट, ओके, अदर देन A. Suppose OB is drawn perpendicular to line L. Then you take a point C on line L such that A dash, B dash, C and BA equal to BC. ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. सपोजिशन एंड कंस्ट्रक्शन. अब आते हैं हम लोग इस ट्राइंगल पे. ध्यान से देखो. In triangle OBC and triangle OBA, sec BC congruent to sec BA from construction. Angle OBC congruent to angle OBA, each 90 degrees, because this OB is perpendicular to AC. Sec OB congruent to sec OB, common
side. Therefore, this triangle OBC, congruent triangle OBA by SAS test, side angle, side test. Now, if OC equal to OE, ध्यान दो, हमने क्या लिया है? OE is radius. देखो, line L is a tangent to a circle with center O and at a point, and it intersects the circle in point A. So by definition, OA is the radius. तो हमने यहाँ लिया, therefore, but sec O is a radius given and by definition of radius. This shows that अगर OA radius है, तो OC भी radius होगा. देखो, therefore segment OC must also be radius from segment number 6 and segment number 7. That means point C, अगर OC radius है, that means point C also lies on the circle. इसका मतलब point A and point C both lie on the circle where line intersects. That means line L intersects circle in two distinct points A and C. Right? देखो, therefore line L intersects circle in two distinct points A and C from given and segment number 8. Given क्यों? हमको A दिया ही है, intersect हो रहा है. हमने B, हमने ये C जो लिया, अभी ये जो है OC equal to OA, अगर ये रेडियस है, दोनों रेडियस है, O is a center, so A and C must be on the circle and the line will intersect circle in A and C. Line L intersects a circle in A and C. But प्रॉब्लम यह है, बाय डेफिनेशन तो वो सीकेंट हो गया लाइन, बट लाइन एल इज नॉट अ सीकेंट. देखो, बट लाइन एल इज नॉट अ सीकेंट बट अ टेंजेंट एंड इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट. ये तो हमको दिया हुआ है स्टेटमेंट में, गिवन में. Therefore, अब इसका मतलब क्या हुआ? अवर सपोजिशन दैट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस. इसका मतलब हमने जो लिया, अगर ये गलत है तो हमने जो assumption लिया है ना, that line L is not perpendicular to OA has to be wrong. It's wrong from statement number 10. Therefore, what is right? अगर वो wrong है तो right क्या है? Line L is perpendicular to radius OA. ये अपना right statement. चलो. We go to next theorem पे जाते हैं, और दो थियरम है अपने, उसके बाद 3.1. हम कह सकते हैं, we can say this chapter is based on a lot of concepts of circle. So जितने भी कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल है उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लो. अब एक कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, ये थ्योरम जो है उसका कॉन्वर्स लेना है अपने को. क्या स्टेटमेंट दिया उन्हें? लाइन परपेंडिकुलर रेडियस line perpendicular to radius at its point on the circle, at its point on the circle is a tangent shape, is a tangent to the circle, is a
tangent to the circle. Okay, let us start now. कॉन्वर्स लेते हैं. कॉन्वर्स मतलब हमने क्या पहले प्रूव किया था, उन्होंने क्या था, द अर्लियर टेंजेंट थियरम, हमने क्या प्रूव किया था इन टेंजेंट थियरम, दैट इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स circle in one point, say point A, then that line is perpendicular to the circle. So हमने प्रूव किया था line L is perpendicular to OA. यहाँ उसका रिवर्स है. उन्होंने कहा if a line is perpendicular to the circle at any point on the circle, then that line has to be a tangent. Okay, इसका मतलब देखो, if a line perpendicular radius at its point, मतलब end point on the circle is a tangent to the circle. अभी given part लिखते हैं. A circle with center N radius Mn, perpendicular line L, to prove line L is tangent to the, हमें यह बताया लाइन L is a tangent to the circle. Okay, so यहां भी हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का और सपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. See, this is a circle with M as a center. Mn radius is perpendicular to line L. We have to prove. So how you will start? हमें supposition लेना है. हम supposition ऐसे लेते हैं कि take a point P. हम इसको perpendicular नहीं मानेंगे. हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये perpendicular क्यों है और कैसे. Take any point on this line other than N. Take a point P. Say point P on line L other than N. Okay, and draw segment और MP ज्वाइन कर दो. तो लिखो वो सपोज हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं इसको. टेक अ पॉइंट P ऑन लाइन L other than N. देखो इस ऑन दिस लाइन, ये लाइन L पे ऑलरेडी पॉइंट N है. हमें क्या लेना है? टेक एनी अदर पॉइंट P ऑन लाइन L which is not N, other than N है, and then join and draw M और इसको हमें ज्वाइन करना है. ओके, ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन.
अब ध्यान से देखो, वी ऑलरेडी नो, देखो उन्होंने ऑलरेडी दिया है लाइन परपेंडिकुलर, सो MN इज परपेंडिकुलर लाइन L दिया हुआ है, दैट मीन्स एंगल MNP विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, बराबर है ना। देयरफॉर इन ट्रायंगल, देयरफॉर लगने की जरूरत नहीं है, इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP equal to 90 degrees from given it is 90 degrees. Statement number 3, अगर ये 90 है, so MP will be what? A side opposite angle 90 is hypotenuse. What is the definition of hypotenuse? Side opposite angle 90. So हम लिख सकते हैं therefore seg MP is hypotenuse. Seg MP is the hypotenuse. उसकी रीजन क्या है? From statement 2 and definition of hypotenuse. स्टेटमेंट नंबर अभी 4 पे जाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड है. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इफ यू कंपेयर MN एंड MP, MP हैज टू बी ग्रेटर देन MN. तो यहां लिखना पड़ेगा हियर MP is greater than MN. MP is greater than MN. उसकी रीजन है इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल hypotenuse is the longest side. ये by definition. अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4. प्लीज ध्यान से देखो. परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मैंने आपको शायद इसके पहले के चैप्टर में बताया था. इसका मतलब इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन पॉइंट N, MN is the shortest possible distance at which the line touches the circle. MN से थोड़ा भी बड़ा हो गया length, so that point will not lie on the circle. It may lie on the line L, but that point will not lie on the circle. यही हमें बताना है. Therefore point P, देखो point P बड़ा है ना, हाँ. सो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये हो नहीं सकता सर्कल के ऊपर. पॉइंट P cannot lie on the circle because ये रेडियस है. MN is radius from statement 4 and definition of radius. वो रेडियस है नहीं, ये रेडियस है. इफ MP is more than radius, point P will not lie on the circle. Therefore statement number अभी 6 पे जाते हैं. Therefore no other point कोई भी पॉइंट नहीं है. देखो no other point except point N. Statement 4 and 5. देखो इसका ये from this we conclude, from these two points
These two statements we conclude that no other statement, यहाँ या यहाँ कहीं भी, no other statement except point N lie on the circle, मतलब which is the common point between line L and a circle. एक ही point, only one point is common between line N and circle. Therefore, we can say statement number sign. Therefore, line L intersects the circle in one and only one point N. ये from statement number 6. Therefore, we can say last जो हमें prove करना है, therefore line L is tangent to the circle from statement 7 and definition of tangent. हो गया. इसको अभी निकालते हैं. अब आते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. Tangent segment is drawn. From an external form, from an ध्यान से देखो. पहले हमने क्या स्टडी किया? पहला थियरम टेंजेंट थियरम. वो क्या था? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट, ये डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट है. देन दैट लाइन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ये हमारा पहला थियरम था. सेकेंड थियरम क्या था? If a line is perpendicular radius, उसका कॉन्वर्स, if a line is perpendicular radius, then that line is a tangent. Okay? अब यहां जो टेंजेंट सेगमेंट थियरम है, इसमें टेंजेंट नहीं है, लेकिन वो लाइन नहीं है. इट्स अ टेंजेंट सेगमेंट है. वो देखो, सेगमेंट में लाइन होते हैं, ये लाइन होते हैं ना. देखो, ये लाइन टेंजेंट है, बराबर है. ये है आपका
लेकिन हमें क्या चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन लेंथ, हमें लेंथ से इंटरेस्टेड है. In earlier first two chapter we were not, in first two theorems we were not interested in the length of a tangent, we were interested in the concept, वो perpendicular है या नहीं है, अगर वो perpendicular तो है, वो tangent है वगैरह वगैरह. यहाँ हमें specifically length से मतलब है. So इसका मतलब हम लोग इसको O लेते हैं, इसको P लेते हैं, इसको A और इसको B लेते हैं. So we are going to show, to prove AP equal to BP. ये दो जो अपने टेंजेंट सेगमेंट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें बताना है, ये इक्वल है. ये सीबीएसई आईसीएसई नीचे अपने सेगमेंट है एपी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, ये प्रूव करना है. तो गिवन लिखो, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, पॉइंट पी is in the exterior of circle. सर्कल से बाहर है, ये सर्कल है, ये इंटीरियर सर्कल है, वो एक्सटीरियर सर्कल है. लाइन AP and line BP are tangents to the circle in A and B respectively. To prove AP congruent to हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. You have to draw OA, OB and OP. Draw sec OA, sec OB and sec OP. ये हमारा है कंस्ट्रक्शन. स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, हमें देखो, वी हैव ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन वी हैव नाउ 2 ट्राइंगल्स. ये 2 ट्राइंगल्स हैं, हमें ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. द मोमेंट यू शो दिस 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, AP विल बी इक्वल टू BP बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो हो गया. तो हमने इसको कैसे प्रूव करना है, देखो, इन ट्राइंगल OAB, OAP एंड OBP, OAP एंड OBP, ये जो है कॉन्ग्रुएंट है. रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. व्हाट अबाउट दिस? पहला, वेरी फर्स्ट थियरम, टेंजेंट थियरम. Since these two are tangents at a point on a circle, radius will be always perpendicular to the line, or line will be perpendicular to radius. तो ये उससे ये हो गया तुम्हारा 90. और what about this? ये है आपका hypotenuse, common side. Which test? Very interesting. देखो, ये साइड एंगल साइड नहीं है, एंगल साइड साइड ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं. एक टेस्ट, एक थियरम है, हमें 9th में किया था, शायद उसके आपके मार्क्स भी गए होंगे, शायद हमें बहुत लेंदी था. वो सिर्फ थियरम का नाम इस्तेमाल करना है. याद आया? हाइपोटेन्यूज, थियरम ऑफ
या हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। चलो स्टार्ट करते हैं। In triangle OAP and triangle OBP, hypotenuse OP congruent। अच्छा ये थोड़ा खाई हो जाएगा। एक स्टेटमेंट हाइपोटेन्यूज के पहले हाइपोटेन्यूज 90 तो प्रूव करेंगे ना हम लोग पहले। चलो आप लोग प्रूव करते हैं उसको पहले। Seg OA परपेंडिकुलर टू लाइन, इसको L और इसको M पकड़ते हैं। ये बाद में लिखना पड़ेगा क्योंकि अ सर्कल गिवन में अ सर्कल विद सेंटर P, पॉइंट P इज एन एक्सटर्नल सर्कल, लाइन L एंड लाइन M are tangents to a circle in point A and B and they intersect each other, both line मतलब intersect each other in point P. So therefore line OA perpendicular line L and sec OB perpendicular to line M, that is angle OAB, sorry OAB नहीं OAP, OAP equal to angle OBP को 90 डिग्रीज। इसका रीजन है टेंजेंट थ्योरम, पहला थ्योरम। देयरफॉर अभी लेते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, hypotenuse OP congruent to hypotenuse OP, OP is common side। Statement number 4, therefore sec OA congruent sec OB radii of same circle। Statement number 5, therefore triangle OAP congruent triangle OBP hypotenuse side theorem। Statement number 6, therefore seg AP congruent seg BP, corresponding sides of congruent triangles। With that we complete our next theorem। अब हमें जाना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। I said a question, मैंने ये नहीं कहा कि हमें थियरम की तरफ जाना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको जैसे याद है लाइक सेकेंड चैप्टर में, बिफोर आई टॉट यू
अपोलोनस प्रिंसिपल। अपोलोनस प्रिंसिपल के पहले मैंने आपको दो क्वेश्चंस पढ़ाए थे। एक था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसे ही अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Okay, before we go to 3.1, we start and we try to solve extra question. The extra question is, this can be asked as a proof I am giving you here as a proof. It can be asked as a numerical question for a solution. No, but that solution will contain proof along with the solution, remember. For example, in 3.4, question number, 3.1, after this we are going to go for that question itself. 3.1, in practice set 3.1, question number 4, you have this question. So what we'll do, I will explain the proof and immediately after that we'll go for 3.1, question number 4 first, because already the proof is written, so I want to only make minor changes. And we'll go for 1, 2, 3 question later. Let us start now with question number, which is extra question. See what they are given us is this line A and line O is the center of circle. Line A and line B are tangents to the circle. They are what? They are tangents to the circle. Okay? Also line A, they are tangents to a circle at point P and Q. Also line A is parallel to line B. This information also they have given you. What we have to prove? We have to prove that this segment PQ is a diameter. So how will we start? We will draw a line C. This point line C. We will draw a line C passing through center O, you can see here, and parallel to line A. And then draw a radius OP and radius OQ. Okay? Look at the first statement. The first statement says angle XPO equal to angle TPO equal to 90. This is the tangent, this is the radius. So it is tangent theorem. Now we know angle C is parallel to line C is parallel to line A cut by transversal PQ. Okay, this is from construction only. So what we get is altered angle. This angle, please see this and this. It is forming Z. XPOS. So angle XPO equal to angle POS equal to 90 alternate angles. At the same time, look at this. TPOSQ. This is Z, alternate angles. This is F, corresponding angles. Therefore, these two angles, this angle and this angle also congruent. Both are, this is 90, so this also becomes 90. Now, add these two, this and this angle and this angle. We have to add POS and QOS. What is POS and QOS here? POS is this, QOS is this. This angle, POS plus QOS, add them, you get 180 because 90 plus 90 is 180. But you can see they are adjacent angles
and their sum is 180. So they form a linear pair. Therefore, we can say ray OP and ray OQ are opposite rays from segment number 4 and definition of angles in linear pair. Therefore, point OP, OQ are nothing but they are in the same straight line, they are collinear points. And then, therefore, PQ becomes diameter. Use this. Now, I have written this as extra question. Now we change it. This is practice set, sorry. Practice set 3.1, question number 4. We will read this question. What is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? So, O is center of circle with line A and line B are tangents to a circle. Okay. This one information we have to write PO equal to OQ equal to 4.5 centimeter. That is radius. This entire thing, and then final statement number 8. Therefore, PQ is 2 into PO equal to 2 into 4.5, 9 centimeters from statement 7 and given. सिर्फ इतना ही करना है. क्वेश्चन 4 अपना हो गया. ये सब कंप्लीट वैसे का वैसे ही है. We will now go for next question. Draw a circle. We'll read the question. In adjoining figure, the radii of a circle with center C, you can see, this is a circle with center C. Radius will become AC. Radius is 6 centimeter. Line AB is a tangent at point A. Answer the following question. We have to answer the questions. ओके आंसर करेंगे भाई. पूछो. आस्क द क्वेश्चन, विल सॉल्व इट. पहला है, पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं.
What is the measure of angle CAB? Given लिखो पहले. Wait for 2 minutes. Okay. So write given. Circle with center C. Line AB is a tangent. Line BA is tangent to the circle at A. So now construction लिख दो. So this is the question. Draw radius AC of CA and sec BC. Answer 1. What they ask us, what is the measure of angle CAB? What is the measure of angle CAB? You write down line BA perpendicular radius CA. Reason, tangent theorem. Therefore, angle CAB, मैंने CAB पूछा है ना? Yes, angle CAB equal to 90 degrees. अब आता है आंसर 2 पे. What is the diameter? What is the distance of C from line AB? Shortest distance of line AB from the center of circle is the perpendicular distance, which is AC. But AC equal to, therefore AC equal to radius of circle equal to, कितना दिया हमने radius of circle? 6 centimeters. Therefore, distance of line AB from center C is 6 centimeter.
Remember always perpendicular distance is the shortest distance. Okay. Next लिखो. Distance AB is 6 centimeter. What is distance BC? अगर उन्होंने आपको देखो we know this is 6 centimeter. अगर उन्होंने AB भी 6 centimeter दे दिया तो what will be BC? If AB equal to 6 centimeter, AC equal to 6 centimeter, in triangle CAB, angle CAB 90 degrees from 1 or tangent theorem. Therefore, Pythagoras theorem का इस्तेमाल करो. Therefore, BC square या CB square is equal to AC square plus AD square. उन्होंने क्या पूछा है? BC पूछा है, C पूछा है. BC, फाइन BC. BC पूछा है तो BC लिखो. AC is 6 square plus 6 square. Therefore, BC equal to 36 plus 36. कितना आता है ये? 72. Therefore, BC equal to 2 into 36 BC square. Therefore, BC equal to 6 root 2 centimeters. Taking square root from both sides. Subset answer 4. Fourth क्या पूछा है? What is the measure of angle ABC? What is the measure of angle ABC? See, in triangle ABC. अभी ध्यान से देखो. In triangle ABC, AC and AB are equal. इनकी लेंथ इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. तो ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग x लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे x, और ये है 90. सो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का इस्तेमाल करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ दिस. AC इक्वल टू both 6 centimeters. Therefore, angle ACB equal to angle ABC equal to x degrees. Same. Reason है base angles of isosceles triangles. Therefore, angle ACB plus angle ABC plus angle CAB equal to 180 degrees. ये क्या है? Sum of measures of angles of triangle is 180 degrees. ये दो साइड्स इक्वल है तो ये इसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. Therefore, in triangle ACB, angle ACB plus angle ABC plus angle CAB equal to 180. Sum of measures of angles of a triangle is 180. Substitute करो. ACB कितना है? x degrees. ABC ये भी x degrees.
plus 90 degrees equal to 180 degrees. Therefore, 2x degrees equal to 180 minus 90 will be 90. Therefore, x will be 45 degrees. Therefore, angle, क्या पूछा उन्होंने angle? Angle ABC. Therefore, angle ABC equal to x degrees equal to 45 degrees. Explain किया हमने उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. See what they are given us. In the adjoining figure, O is the center of a circle. From point R, segment RM and RN are tangent segments touching the circle in point M and N. OR is 10 centimeter and radius is 5 centimeter. This is 10 centimeter. Radius we have to draw. Centimeter. You have to find what is the length of each tangent segment, what is the measure of angle MRO, and what is the measure of. Okay, चलेगा. वो बाद में करते हैं, पहले लिखते हैं ये. Given a circle with center O, point R is in exterior of circle. Seg RM and seg RN are tangent segments from R to the circle. OR equal to 10 centimeters. Radius 5 centimeter. Find 1, 2, 3. Find MR equal to NR. Then angle MRO. MRN. This we have to find. Chalo, solution. First, draw radius ON
and radius OM, ये अपना कंस्ट्रक्शन है. Statement number 2. Seg Rn perpendicular radius OM, reason tangent theorem. देखो, Rm is a tangent, OM is a radius. So by tangent theorem, this angle RM or OMR will become 90 degrees. Therefore, angle OMR 90 degrees. Statement number 3. Use Pythagoras theorem in this. Therefore, OR square equal to OM square plus MR square. Pythagoras theorem. What is OR? 10 square equal to 5 square plus MR square. 10 square is how much? 100. Equal to 5 square 25 plus MR. So what will be MR square? It will be 100 minus 25. मैंने 20 इस साइड लेके आया, बाद में घुमा दिया. Therefore MR square will be 75. So MR कितना होगा? Square root of 75. 75 का square root 25 into 3. That will be 5 root 3 centimeters. So MR कितना है? 5 root 3 cm. Similarly, we can show NR equal to 5 root 3. Therefore, MR equal to NR equal to 5 root 3. Now we have to find MRO. Let's check this. OM equal to half MR, given OM equal to 5 and MR equal to 10. Statement number 6. Therefore, in triangle OMR, angle MRO 30 degrees. इसका रीजन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 triangle. Side opposite angle 30. Side opposite, ये एंगल 30 है तो साइड अपोजिट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. ये है प्रॉपर्टी. तो ये हो गया आपका 30. Similarly, we can show this also as 30. Statement number 7.
Similarly, we can show angle NRO equal to 30 degrees. Last segment. Therefore, angle MRN पूछा है. Therefore, angle MRN equal to angle NRO plus angle NRO. Angle addition property and statement 6 and statement 7. So this was 30 degrees plus 30 degrees. Therefore, angle MRN 60 Okay, now go to question number 3. इसके पहले इसको इरेज करो. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया है. RM and RN are tangent segments to a circle in with point O. Prove that OR bisects angle MRN and as well as MON. Question number 3. Given O is center of circle, seg Rn and seg Rn are tangent segments from point R in which is in exterior of circle. Prove that. Ray OR bisects angle
MON and angle MR. यह हमें प्रूव करना है। चलो लग जाते हैं प्रूव करने को। तो यह हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, इसका मतलब दिया नहीं। Draw radius OM, radius OM and sec OR. Proof. Statement number 1. हम ये ट्राइंगल लेंगे। फर्स्ट वी शो this segment congruent to this segment. SSC टेस्ट भी कर सकते हो, चलो वही करते हैं। इन ट्राइंगल OMR and triangle ONR, sec OM congruent sec ON. Radii of same circle. देखो sec OM congruent to sec ON, radii of the same circle. Statement number 2, sec OR congruent segment OR. Common side, ये common side OR. Statement number 3, sec RM congruent sec RM. Theorem of tangent segment theorem लिखा तो भी चलेगा। Tangent segment, these two will be congruent by tangent segment. Fourth, therefore triangle OMR congruent triangle ONR, because these two triangles congruent by all three corresponding sides are congruent by side test. Statement number 5, therefore angle MOR equal to angle NOR, angle MRO equal to angle NRO. इसकी वजह क्या है? Corresponding angles of congruent triangle. Statement number 6, therefore angle MON equal to angle MOR plus angle NOR, angle addition property. But these two angles are equal, therefore this becomes 2 angle MOR. Therefore angle MOR equal to half angle MON. Similarly, we can show angle MRO equal to half angle MRN. Therefore, sec OR bisect angle MON and
angle MR from statement 6 and statement 7. With that we complete प्रैक्टिस सेट 3.1. क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले स्टार्टिंग में किया है. ओके